Hello everyone. Today we will be solving 9618 Summer 21 Paper 4-1's question number 3. It's a question relating to file handling and OOP combined, so it's a good question for you to practice before your exams. Okay, so the question says, a computer game requires users to travel around a world to find and open treasure chests. Each treasure chest has a mathematics question inside. The user enters the answer. The number of points awarded depends upon the number of attempts before the user gives the correct answer. The program will be created using object-oriented programming. The following class diagram describes the class treasure chest. Okay, so this is the class. These are the attributes, this is the constructor, and these are all the methods inside the class. Okay, so create a new program, write program code to declare the class treasure chest. Do not write any other methods. The attributes are private if you are using Python. Include attribute declaration using comments. So in my videos we use Python, so we are going to do attribute declarations using comments. Okay, so let's get started. We are just gonna declare the class. The name is treasure chest. Okay, so because we are creating a class, we have to make the attributes private as well. So this is the basic way of making a class. Question, answer, and points. So question, answer, points. Okay. Okay, so we have to take, because we're creating the constructor, it says that all three of these attributes are taken as parameters, so we don't have to initialize any one of them. So this is basic. The double underscore means that we're making the attribute private and that we cannot access it without making get or set methods. If we don't make them private, then that means that we can access them outside the object without using any get or set methods. So this makes our input. Okay. So for the B part, it says the text file treasure chest data.txt stores the data for 5 questions in the order question, answer, and points. For example, the first 3 lines of the file are question 2 by 2 is the question, 4 is the answer, and 10 is the points. Okay. So we have to write program code for the procedure read data to read each question, answer, and points from the text file. Create an object of type treasure chest for each question. Declare an array named array treasure of type treasure chest. Append each object to the array. Append, okay. Use exception handling to output an appropriate message the file is not found. Okay, so what we are basically doing here is that they've told that we have 5 questions. Okay, so we can actually just make an array of 5 elements basically. Okay, so that is clear. They've asked us to append, which means that we don't really have to use the loop and the index method, so we can just directly append and we don't need to initialize it either. Okay, so and then read each question, answer, and points, and because the element is going to be an object of type treasure chest, so that doesn't mean that we don't need a 2D array either. We just need the object and we're just gonna append it to the array and use exception handling. Okay, so this is pretty basic, and we know that the first line is going to be the question, the second line is going to be the answer, and the third line is going to be the points. Okay, and we know that if there are 5 questions, so 5 threes are 15. There are going to be 15 lines, and we can just run a loop of 5 times to get the object. And the loop is going to, we don't need to put an extra loop for example, usually the loop we put when we're dealing with files is that while it is not end of file or while we do not have an empty line, तब तक loop चलता है, right? But because we know कि हमारे पास 15 lines ही हैं, तो we can just put a loop for which is going to run for 5 times because we know 5 questions. Okay, so moving, we can just start off with the B part. Okay, so first thing we need to check if the procedure is inside the class. Okay, it's not inside the class, which means that we have to write it outside of the indent. Okay, so we can just write read data. And it's a procedure, so we don't have to return anything. Okay, so first thing we can do before opening the file is that we can declare the array. And because it said append, so we don't need to initialize it, because initialize करके जब आप append करोगे तो वो like it's gonna add new indexes and not gonna replace the initialized index. Okay, so treasure
Now we are going to open the file. File is equal to open or then the apostrophe quotation mark, sorry, not apostrophe. And then we're gonna get info and we're gonna copy the file path and then we're gonna put a slash and we'll put the name and then we're opening it for read. Say we are gonna create an object of type treasure chest for each question. Say so what we can do for making it easier for us is that हम लोग पहली line read करेंगे, sorry, file dot read line dot strip. So yeah, this is going to read the first line and the first line is going to be the question. And the second line is going to be the answer and the third line is going to be the point. So the first line क्योंकि question है तो हम उसको string रख सकते हैं because ये integer नहीं हो सकता. तो answer and points को we can make an integer. But we don't really know if all of them are, but we can make them integers actually. So question answer is equal to file dot read line dot script and same goes for int file read line. Okay, so we have to put this in a loop as well. So for x in range 5, because we know 5 questions there, we're just going to put it in a simple loop of 5. Okay, and now we're going to create an object. We can just उसको array में append करेंगे, एक object बनाएंगे. इसके अंदर we're going to put the question, the answer, and the points. One thing we missed over here is the attribute declaration. Yes, जिससे हमें पता चलना था कि question answer points की. Yes, so string integer integer. तो यहाँ पे it was important कि हम answer और points को integer में convert करें and question को भी keep it as a string because उन्होंने हमें ऊपर बताया हुआ है कि class के अंदर this is a string, this is an integer and this is also an integer. Okay, and this is gonna run for 5 times because we have 5 questions. And then हमने exception handling करनी है. Okay, print file not public. Yeah. So let's run through this. ये procedure में enter होगा, it's gonna have the it's gonna make the array. सही है, फिर it's gonna do the exception handling, file open करेंगे and then the file हमारी open होगी and then it's gonna run a loop for 5 times. The first line is always going to be the question, the second line is the answer, and the third line is the points. हमने answer and points को we converted into integers and then we appended that as an object of treasure chest and we appended that into the array जो हमने initially बनाई थी. This is going to run for 5 times because we have 5 questions. और जब ये for example second time loop run करेगा तो this is going to be the 4th line in the file because it को file को जब हम file से जब हम line read करते हैं तो वो हमेशा order में होती है. This is going to run for the 4th line, which is going to be the question, the 5th line is going to be the answer, the 6th line is going to be the point. So this is how this procedure is basically going to work. Okay. For the C part, it says the main program repeats each question until the user inputs the correct answer. The number of points awarded depends on the number of attempts before the user gives the correct answer. Okay. The class treasure chest has a method get question that returns the question. Write the method get question. Okay, so this is easy. So इसको हम अलग कर देंगे. We're gonna go back inside the class and create the method. Okay, so ये हमने return कर दिया question. The class treasure chest has a method check answer that takes the user's answer as a parameter. It returns true if the answer is correct and false otherwise. Okay. So basically, over here, we need to pehle check. Achha, so they haven't asked us to check a question kya hai and then answer check करना है. So we're just gonna check if the answer is same or not. Okay, so we are gonna write def check answer because we are
Okay, we're gonna take the answer as the parameter, and because we are inside the class, so they haven't asked us to like check a question क्या था, and then फिर उसका answer निकालो, and then check करो कि answer सही था या नहीं. And because this method is inside the class, so what we're gonna do is कि if self dot answer underscore underscore answer is equal to the answer जो parameter में था, this is just gonna क्योंकि वो जब जो भी ऑब्जेक्ट होगा ना, बिकॉज इट्स एन ऑब्जेक्ट इज द इंस्टेंस ऑफ दैट क्लास, तो वो उस क्लास के अंदर जाके वही आंसर आएगा जो क्वेश्चन मैच करा था. तो बिकॉज दिस मेथड इज इनसाइड द क्लास, सो वी डोंट नीड टू क्रॉस चेक के इफ द आंसर दैट वी आर रेफरिंग टू इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन दैट the user has answered, because this method is inside the class. So we're going to use self dot underscore underscore answer directly. Okay, so we have to return true, sorry, and otherwise we're going to return, we don't have to write else, otherwise we're going to return false. Okay, a third method is get points, takes the number of attempts as parameter. If the number of attempts is 1, it returns the value of points. If the number of times is 2, it returns the integer value of points divided by 2. If the number of times is 3 or 4, it returns the integer value of points divided by 4. If the number of times is not 1 or 2 or 3 or 4, it returns 0. Okay, so this is just random lines of code. Nothing to think about. They've given everything. We just have to follow what they've said step by step, and we can easily score sare points, marks. So we're going to check if the number of attempts is 1, it returns the value of points. If attempts is equal to 1, return self dot underscore points. यहाँ पे हम elif की condition लगा सकते हैं. If the number of times is 2, it returns the integer value of points divided by 2. So if attempts is equal to 2, return self dot underscore points divided by 2 का integer value. Okay. So third option is if attempts is equal to 3 or 4, it returns the integer value of points divided by 4. So यहाँ पे हम दो conditions लगाएंगे. And if it's not 1, 2, 3 or 4, it's just going to return 0. Okay, so this is our third method. For the fourth part, it says write program code for the main program to do all of this. So we're just going to go step by step. We can read it out first so we know what we're doing, and then we're just going to read each point step by step and going to write the code for that. So first it says we have to call the procedure read data, which is this is what we're doing in the main program. Okay, so it says ask the user to enter a question number between 1 and 5. Output the question that matches the question number entered by the user. Check if the answer input by the user is correct using the method check answer. Repeat the question until the user inputs the correct answer. Count how many times the user attempted the question. Use the method get points to return the number of points awarded. Output the number of points the user is awarded. Okay, so what we are going to do is we are going to enter the main program here. Okay, so it says that we have to call read data. So ये हमने कर लिया. It's saying, okay, one thing over here that we need to do is that we can, because we would have to use the array treasure in the main program to output the question and check if the answer is input, because हम लोग उस array treasure की array को use करेंगे in our main program, so we need to put this outside the procedure. Okay, and we can actually just make it a global array ताकि हम उसको
प्रोसीजर के अंदर यूज़ कर सकें और वो चेंज हो जाए। ग्लोबल इसलिए ताकि वो आउटसाइड द प्रोसीजर भी इट्स चेंज्ड। ओके, जब हम उसके अंदर चीज़ें अपेंड करेंगे तो वो बाहर हों। ओके, so this is array treasure. Now what we're going to do is that we're going to ask the user to enter a question number between 1 and 5. So for example, we just say num is equal to int input, please enter question number between 1 and 5. Okay, so they haven't asked us to validate it. We don't really need to do it because they haven't asked. So output the question that matches the question number entered by the user. So अब हम okay, so one thing we need to keep in mind, I've said this in my previous videos as well, is that Python के अंदर the array starts with index 0. सही है? तो अब if the user enters question number 1, that means अब हमारी array treasure जो है that is of 5 elements. इसका मतलब है उसके indexes are 0, 1, 2, 3, 4, not 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so if the user enters question number 1, तो हमारा question number 1 will be at index 0 of the array. तो हम लोगों को num -1 करना पड़ेगा to access the correct question. Okay, so अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, we're gonna print, हम लोग क्वेश्चन निकालेंगे and we're gonna print the question. सही है? We can make a different क्या नाम है वेरिएबल फॉर इट पहले कि वी कैन डू दैट विच जस्ट मेक्स इट ईजियर. सो क्वेश्चन हमारा है, हम array पे जाएंगे, उसके हम num -1 पे जाएंगे एंड देन वी आर गना गेट क्वेश्चन इज द नेम ऑफ द प्रोसीजर. इससे हमारे पास क्वेश्चन आ जाएगा एंड देन वी आर गना प्रिंट द क्वेश्चन. सही है? हम ऊपर डायरेक्ट भी प्रिंट कर सकते थे कि हमें इसको वेरिएबल में डालने की जरूरत नहीं थी. वी कुड जस्ट पुट दिस इन अ ब्रैकेट एंड प्रिंट इट, बट आई जस्ट मेड इट टू मेक थिंग्स ईजियर. ओके, अब हम check if the answer input by the user is correct using the method check answer. Now we are gonna take input from the user. Please enter your answer. Okay, so now we are gonna use the method check answer to check if the answer is correct. अच्छा, इसके अंदर अब because we have to also, हमने बाद में क्योंकि पॉइंट्स जो हैं वो आउटपुट करने हैं तो फॉर दैट वी आल्सो नीड टू कीप चेक कि हमारी अटेम्प्ट्स कितनी हैं. सो वी हैव टू क्रिएट अ वेरिएबल फॉर काउंट्स. अब दिस इज़ द फर्स्ट टाइम द यूज़र हैज़ एंटर्ड देयर आंसर, तो हमारा काउंट इस वक्त होगा 1. सही है? अब वी आर गना पुट अ लूप ओवर हियर जहाँ पे वी आर गना चेक कि इफ़ के वाइल हम लोग हम लोग जाएंगे array पे, उसके num -1 पे डॉट उसका ही मेथड है check answer. सही है? Now we're gonna go to check answer and over here we are gonna put the answer that we got from the user. सही है? This is gonna check कि answer सही था कि नहीं. अब उसका हम देखेंगे कि while this is false तब तक ये लूप चलेगा and while the count is less than equal to 4, less than equal to 4. Okay, so this is going to check two things because for example the user the user does not put the correct answer at all. तो ये तो नहीं हो सकता ना. count is equal to less than equal to 4 का point is कि अगर 4 से ज़्यादा attempts हो गई हैं, यूज़र की गलत अटैम्प्ट हो गई हैं 4 से ज़्यादा ऑब्वियसली, तो उसको 0.0 मिलेंगे. तो अगर वो कॉन्टिन्यूसली, अगर हम लोग ये वाले चीज़ स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे तो इसने अगर इफ़ द यूज़र एंटर्स द रॉन्ग आंसर कॉन्टिन्यूसली लाइक फॉर एवर, तो ये लूप हमेशा चलता रहेगा. लेकिन उसका पॉइंट नहीं है बिकॉज अगर आपके पास आपकी 5 से ज़्यादा अटैम्प्ट हो गई हैं, चाहे आपका 5 अटैम्प्ट के बाद करेक्ट आंसर ही है, तो यू कैन गेट 0 पॉइंट्स एनीवेज. सही है? तो इट शुड एग्जिट द लूप अगर उसके 4 से ऊपर काउंट हो गया है. सही है? तो अब इसके अंदर व्हाट वी गोना डू इज़ कि अगर अब जब उसने आंसर इनपुट किया, अब ये लूप के अंदर जब ये लूप चेक करेगा अपने आप को लूप में, तो यहीं पे वो चेक करेगा कि आंसर उसका सही था या गलत. अगर उसका फर्स्ट अटैम्प्ट में फॉर एग्जांपल आंसर था गलत, अब वो वापस क्वेश्चन प्रिंट करेगा. इट्स गोना प्रिंट द क्वेश्चन अगेन फॉर द यूज़र. repeats the question until the user inputs the correct answer. सही है? फिर it's gonna ask for the answer again. सही है? तो we can just copy एंड अब उसने क्योंकि एक और आंसर इनपुट कर दिया है तो हम काउंट को काउंट +1 कर देंगे. ओके, सो दिस इज़ हाउ आवर लूप इज़ गोना वर्क. और फिर फॉर एग्जांपल इफ़ अब हमारा आंसर सही था
अब वो ऊपर जाके वापस चेक करेगा कि आंसर सही था कि नहीं। अगर आंसर सही था तो वो लूप एग्जिट करेगा, लूप में से लूप को चलेगा ही नहीं। या फिर अगर आंसर फिर भी गलत था तो इसने चेक किया अगर काउंट लेस देन 4 था, या फॉर एग्जाम्पल उसने 4 दफ़ा गलत आंसर इनपुट किया है एंड फिर उसने दोबारा चेक किया है, उसने आंसर फिर 5th टाइम भी गलती इनपुट किया है, लेकिन उसने देख लिया कि काउंट जो है वो 4 से ऊपर हो गया फॉर एग्जाम्पल, या 4 हो गया है, तो उसके लिए एग्जिट द लूप, क्योंकि अब उसके पॉइंट्स 0 ही होंगे रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट के उसका आंसर सही था या नहीं, इफ अगर उसके 4 दफ़ा ऑलरेडी गलत हो चुके हैं। सही है, तो अब वी आर जस्ट गोना प्रिंट the number of points, the points that the user is gonna get, and we're gonna use the method get points, and इसमें यहाँ पे हमारे पास काम आएगा जो काउंट हमने वेरिएबल यूज़ किया, क्योंकि हम लोगों ने अटैम्प्ट नंबर ऑफ अटैम्प्ट जो हैं उनको एज ए पैरामीटर पास करना है गेट पॉइंट्स में, ताकि वो हमें बता सके कि हमें कितने पॉइंट्स मिले। सही है, सो दिस इज़ हाउ आवर मेन प्रोग्राम इज़ गोना वर्क। एंड ओवर हियर एक चीज़ जो आई थिंक आई शुड मेक इट क्लियर ओवर हियर, इसके पहले हम लोगों ने array जो थी हम लोगों ने डिक्लेयर की थी इनसाइड आवर प्रोसीजर, but why I made it a global array in the main program and then declared the global passed the global array in the procedure is because हम लोगों ने ये main program में array यूज़ कर रहे हैं। तो अगर ये array डिक्लेयर ही हमने प्रोसीजर के अंदर की होती तो हम लोग अगर मेन प्रोग्राम में इसको यूज़ करना चाहते तो वो एरर दे देता, बिकॉज दैट इज़ अ वेरिएबल जो हम लोगों ने प्रोसीजर के इनसाइड डिक्लेयर किया था, तो प्रोसीजर के बाहर इट्स नॉट अ नोन वेरिएबल। सही है, तो इसलिए हमने उसको ग्लोबल डिक्लेयर किया हुआ है, तो वो रन नहीं करेगा या वो एरर दे देगा अगर हम लोगों ने उसको प्रोसीजर के अंदर किया होता। सही है, सो द 5th पार्ट इज़ कि हम लोगों ने प्रोग्राम टेस्ट करना है, सिलेक्ट क्वेश्चन 1 एंड आंसर इट करेक्टली इन द सेकंड टेस्ट, सिलेक्ट क्वेश्चन 5 एंड आंसर इट करेक्टली द सेकंड टाइम। तो हम लोग फर्स्ट टेस्ट हम लोग पहले करते हैं कि हम लोगों ने क्वेश्चन 1 सेलेक्ट करना है एंड हम लोगों ने उसको उसका आंसर करेक्ट देना है जो भी होगा फर्स्ट क्वेश्चन। सही है, तो हम इसको रन करते हैं, होपफुली वी वोंट हैव, हम लोगों ने क्वेश्चन 1 सेलेक्ट किया, 2 इंटू 2 का आंसर होता है 4, हमारे पास एरर आ गया। हाँ, देयर इज स्पेलिंग मिस्टेक। ओके, आंसर 2 इंटू 2 का होता है 4, उसने हमें दे दिए हैं 10 पॉइंट्स। अब इन द सेकंड टेस्ट इट सेड सिलेक्ट क्वेश्चन 5 एंड आंसर इट करेक्टली द सेकंड टाइम। इसका मतलब है हम क्वेश्चन नंबर 5 सेलेक्ट करेंगे एंड जो फर्स्ट आंसर जो भी हम डालेंगे उसको हम रैंडम नंबर डाल देंगे विच इज़ नॉट गोना बी द करेक्ट आंसर, और हम लोग सेकंड टाइम पे जो आंसर डालेंगे दैट इज सपोज टू बी द करेक्ट आंसर। सो वी हैव चोजन क्वेश्चन 5। तो 3000 प्लस 4000 इज 7000, तो हमने 7000 के अलावा कोई भी नंबर लिख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल 89। सो इट हैज़ आउटपुट द क्वेश्चन अगैन एंड हम लोगों ने अब करेक्ट आंसर आउटपुट इनपुट करना है विच इज़ 7000 एंड उसने हमें 9 पॉइंट्स दिए। ओके, सो आई एम गोना क्रॉस चेक विद द मार्किंग स्कीम ताकि वी कैन मेक श्योर कि हमारे दोनों स्क्रीनशॉट्स एंड आउटपुट्स करेक्ट हैं या नहीं, एंड देन वी गोना बी डन विद द क्वेश्चन। Okay, so I have cross-checked with the marking scheme, and this is these are the answers that we were supposed to get. So this is the entire code. If you guys have any questions, you can ask in the comments, and please like, share, and subscribe. Thank you.